In the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Here is your English teacher Mehwish Yasin from Divisional Public School and College Sahiwal. How are you all, dear students? Hoping every one of you fine and healthy by the grace of Allah Almighty. I am also fine, Alhamdulillah. Dear students, we often say Alhamdulillah for so many things that we are blessed with. अल्लाह ने हमें बेपनाह नेमतें दी हैं जिसके लिए हम बारहा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. Now, I am going to show you some of the things that we are blessed with. Look here. We are blessed with fruits and vegetables. We are blessed with water. We are blessed with our friends and siblings. And we are also blessed with different seasons. You can see that we are blessed with winter, spring, summer and autumn. Dear students, do you know, I like all these seasons but I love the spring season. And do you know why I like spring season? I love this season because of a natural phenomena which is the main merit of this season. And do you want to know about that phenomena? Let me show you through two pictures. Look here, this is the picture number 1 and in this picture the tree is showing the condition of all trees after winter and autumn seasons. But when it's the springtime, the situation changes absolutely. Look here, the situation is quite changed. Now, my dear students, this growing of new leaves and blooming flowers and the vision of greenery is actually called regeneration. What it is called? It is called regeneration, and that's why spring is called the season of regeneration. And I'm thrilled to announce that today we are going to write an essay on the topic spring, the season of regeneration. This is our topic for our lesson, that is on essay writing, spring, the season of regeneration. But before that, I want to share the objectives of my today's lesson, and they are here. I am going to read them. By the end of the lesson, students will be able to collect points for writing an essay on the spring season, compose an essay on the topic spring, the season of regeneration. Now, my dear students, I am going to guide you people about the passages of essay writing. That firstly you have to write for introduction and then you have to write the body paragraphs जिसमें हम main content को discuss करेंगे and then we have to discuss the conclusion जिसमें हम overall अपनी बात को कंक्लूड करेंगे, अपने ऐसे का इख्तिताम करेंगे. ठीक है, जैसे आज हम स्प्रिंग सीजन पे ऐसे लिखने जा रहे हैं तो हम ओवरऑल सीजन्स के बारे में फर्स्ट पैसेज में डिस्कस करेंगे जो कि ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है. देन देयर कम्स द बॉडी पैराग्राफ्स, तो हम इसमें मेन टॉपिक के बारे में लिखेंगे. एंड देन देयर कम्स द कंक्लूजन, और कंक्लूजन में हम ऐसे का इख्तिताम करेंगे. सो वी आर गोइंग टू पेन डाउन the essay and we are going to start introduction. We are going to collect points for introduction. So let us start. G. Dear students, you know it very well that all the seasons comes in a sequence. जैसे आजकल हमारे यहाँ पे समर है, समर के बाद हमारे यहाँ पे ऑटम आएगा, फिर विंटर्स, फिर स्प्रिंग, फिर इसी तरह से ये सर्कल चलता जाएगा. सो सीजन्स आर 4 परफेक्ट मूवमेंट्स. आवर फर्स्ट पॉइंट इज 4 परफेक्ट मूवमेंट्स. Then comes earth and its climate. Dear students, you know it very well that our earth is very vast and every part of it has a different season or climate. If here is summer nowadays, there would be spring or winter somewhere else. So our next point is earth and its climate. Dear students, seasons are all the blessings of Allah.
We should be thankful to our Lord Almighty for giving us such wonderful seasons. So सभी seasons अल्लाह की blessing है और ये हमारा next point है. Seasons in Pakistan. Dear students, our country is lucky to have all the seasons. We are lucky that we enjoy all the four seasons: winter, spring, summer, and autumn. So, our next point is seasons in Pakistan. Dear students, every season brings its own natural gifts like fruit and vegetables. So, we should be thankful to Allah. And all the seasons are human friendly. You can see that all the seasons are quite human friendly. And our last point is human friendly. Now here is the final composition form of the first passage and I am going to read it for you. First of all, here is a quotation. Dear students, किसी भी ऐसे राइटिंग में अगर हम उसका स्टार्ट कोटेशन से लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है और हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और एज इट इज ही इसको लर्न करना है. ठीक है. The seasons are what a symphony ought to be, four perfect movements in harmony with each other. The earth is very vast and every part of it has a different climate. However, the most prominent seasons on the earth are summer, autumn, winter, and spring. Every season is indeed a great blessing of Allah. Pakistan is a country blessed with all the four seasons. The people of our country enjoy all the four seasons. Every season brings its own natural gifts like fruits and vegetables. All the seasons in our country are human friendly. So my dear students, let's discuss our middle passage. We are going to collect points for the middle passage. And I am going to start. Dear students, our first point is season of regeneration. Spring is truly called the season of regeneration, my dear student, because everything seems to come to life again. ऐसे लगता है जैसे दोबारा से हर चीज़ जिंदा हो गई है. ऐसे ही है ना. देखिए हर चीज़, फ्लावर्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं, ग्रीनरी भी है. Then queen of seasons. Dear students, spring is called the queen of seasons because of its loveliness. So our next point is queen of seasons. Then we are going to discuss about the temperature during spring season. So during spring season, the temperature is neither too hot nor too cold and it's called moderate. And our next point is spring in our country. और इस पॉइंट पे हम ये बताएंगे कि हमारे कंट्री में स्प्रिंग किस मंथ से स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड लास्ट टिल अप्रैल. ये फरवरी से स्टार्ट होकर अप्रैल तक चलता है स्प्रिंग सीजन. एंड देन वी हैव टू टेल अबाउट द फ्रूट्स ऑफ स्प्रिंग कि इस सीजन में कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. एंड हियर इज द मिडिल पैसेज एंड आई एम गोइंग टू रीड इट अगेन. Like I have read the first passage. Today I am going to write an essay on the topic Spring, the season of regeneration. Spring is truly called the season of regeneration because it is the season of rebirth and new beginnings. Fresh birds bloom, birds sing, and the earth seems to come to life again. This season is also called the Queen of Seasons because of its loveliness. In our country, it starts in February and lasts till April. The weather in this season is moderate. During this weather, there is greenery everywhere. The fruits of this season are mainly melons, apricots, peaches, and cherries. It is indeed the loveliest of all seasons. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मिडल पैसेज है जो आपने ऐसे ही इसको लिखने की कोशिश करनी है और लर्न भी करना है. मिडल पैसेजेस जो होते हैं वो 2-3 भी हो सकते हैं जो मिडल पार्ट को कंसिस्ट करते हैं, लेकिन हमने यहाँ आपके लेवल के अकॉर्डिंग 1 पार्ट कंपोज किया. यू कैन कंपोज 2 और मोर, लेकिन परफेक्ट होने चाहिए जिसमें आपके गलती के कम चांसेस हों. ठीक है. लेट्स सी एंड वी आर गोइंग टू कलेक्ट पॉइंट्स for the third passage, which is the conclusion. And
कंक्लूजन में जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है दैट स्प्रिंग सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह से बाकी सीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस. डेफिनेटली जिस तरह से हर चीज़ का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, असर होता है, इसी तरह से स्प्रिंग का हमारे ऊपर बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है. देन affect the mood. Everything affects our mood and all the seasons affect our mood. So does the spring. स्प्रिंग भी हमारे मूड को बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, हमें हैप्पी बनाता है ये सीज़न. हम खुश होते हैं, हम रिलैक्स फील करते हैं अपने इर्द गिर्द खूबसूरत ग्रीनरी को देख के, फूलों को देख के. ठीक है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड थैंक आवर क्रिएटर. और हमें अल्लाह का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, स्पेशली स्प्रिंग के लिए कि हमें इतना अच्छा मौसम दिया है. एंड देन जॉय टू लाइफ. बेटे सभी सीजन्स हमारी ज़िंदगी में जॉय ऐड करते हैं, खुशी को लाते हैं, और इसी तरह से स्प्रिंग भी हमारी ज़िंदगी में खुशी का इजाफा करते हैं. ठीक है. And here is the composition form of the conclusion passage, that is the third passage of our essay, and I'm going to read it. In the end, I would just say that spring season is very important in our lives. It has an influence on what we wear, eat, and what we do in our daily routine. It also affects the mood we are in. Every season has its own benefits. We must praise our Creator for bestowing us such wonderful seasons, and especially spring. In fact, every season brings joy to life. As someone said, there is no such season, such delight can bring as summer, autumn, winter and spring. बेटे ये भी एक कोटेशन है, इसको भी आपने कोशिश करना है एज इट इज़ लर्न करें. एंड इट इज़ अ वेरी नाइस कोटेशन. आई रियली लाइक इट. दैट्स व्हाई आई read it here. That is all about our essay. That was about spring season, and I'm going to assign you your homework. And in your homework, what you have to do, you have to write down an essay on the spring season in your own words. बेटे आपने खुद भी सोचना है स्प्रिंग सीजन के बारे में, और आपने कोशिश करनी है कि आप इस सीज़न के बारे में खुद पॉइंट कलेक्ट करें. और जिस तरह से टीचर ने आपको गाइड किया है कि आपने 3 पैसेजेस में ऐसे लिखना है, ऐसे लिखने की कोशिश करें. ठीक है. That was all from my side. Thank you so much, my dear students. Stay happy always, and Allah Hafiz.